Assalamu alaikum students and good morning. I am Miss Sana Ansari and I am again here to welcome you all to lecture number 3 of class 3. Student, before starting our today's lecture, let's take a preview of the last lecture. In the previous lecture, we taught about discuss input and output devices in detail, explain the function of input and output devices, highlights their importance. How many chapters we have covered in first term? Let's have a look. Paint with Wiz, input and output devices, Wiz looks back. Students, today I begin my third lecture. Wiz looks back. Students, do you know about the abacus? No? Okay. Let me tell you about the history of abacus. Thousands of years ago, Chinese used the abacus, a wooden frame with rods filled with rows of beads. हजारों साल पहले की बात है, चाइनीज जो थे उन्होंने इसकी इजाद की थी अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये लकड़ी से बना एक फ्रेम होता था जिसमें बहुत सारी रॉड्स लगी होती थीं और कलरफुल बीड्स लगे होते थे, जिसकी हेल्प से उस जमाने के लोग अपनी कैलकुलेशन करते थे। Which was the first counting machine? The Pascaline was the first counting machine. It was only used to add and subtract. पास्कलिन सबसे पहली काउंटिंग मशीन थी जो सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए इसका यूज किया जाता था। What do you know about tablet? Students, do you know about the tablet? I hope some students little bit know about it. A tablet is a personal computer with touch screen. We can use our finger or a digital pen. टैबलेट भी पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। इसकी टच स्क्रीन को फिंगर की हेल्प से टच करके कोई भी आइकन हम ओपन कर सकते हैं और इसकी टच स्क्रीन को हम अपनी फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल पेन से भी यूज़ कर सकते हैं। What could Leibniz calculator do? In 1671, the German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz designed a calculating machine called the step recorder, which was capable to perform multiplication and division as well. Leibniz जो है वो एक जर्मन वर्ड है। उन्होंने सबसे पहले इस कैलकुलेटर की इजाद की थी जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता था। Which was the first electronic computer? ENIAC. ENIAC was the first electronic computer that could solve problems at a faster speed than any other computing machine of that time. ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर इस शक्ल में होता था और इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती थी। लेकिन ये उस ज़माने में जितने भी कंप्यूटर्स या कैलकुलेटिंग मशीन थी उसके कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। लेसन रिव्यू। स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेसन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड: outline the history of computer, discuss how computer have changed over the years, elaborate on the different devices, summarize
The development of computer.